Good morning, everyone. This is the next video of our chapter number 5, that is natural vegetation. In last video, we have discussed about the deciduous forest. So until we have already discussed about the two type of the forest, that is evergreen forest and deciduous forest in this chapter. In evergreen forest, we have two parts, that is evergreen, tropical evergreen forest and semi-evergreen forest. And in the deciduous forest also we have two parts, that is deciduous, moist deciduous forest and the dry deciduous forest. And today we are going to discuss about the tropical thorn forest. This is the third type of forest or vegetation that is found in India. I already told you that we have five type of the vegetation that we will discuss in this chapter that is found in India. First one is the evergreen and semi-evergreen forest. Second one is the tropical deciduous forest, and third one is the tropical thorn forest, montane forest also we will discuss, and swamps. Okay, so our first topic in today, our first topic is tropical thorn forest. Okay, so tropical thorn forest generally found in those areas which receive rainfall less than 50 centimeter. Okay, less than 50 centimeter. This region is the semi-arid area. Okay, this region is known as the semi-arid area, and in arid region we receive rainfall less than 30 centimeter. So between 30 to 50 centimeter rainfall, those area which receive rainfall between 30 to 50 centimeter, we have tropical thorn forest in India. Okay, and grasses and shrubs are important vegetation. Grasses and shrubs are vegetation that is found in the tropical thorn forest. Okay, these are the semi-arid area of western Punjab. So in India, tropical thorn forest found in two regions, in northern part and southern part. In northern part we have tropical thorn forest in the marginal region of the arid region, that is Gujarat and Rajasthan, western part of the Gujarat and Rajasthan. Here we have arid region, and this region is the semi-arid region of western Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. Okay, so this region is the semi-arid region. Here we found tropical thorn forest. Okay, and in southern India, in the interior of the peninsular plateau, that is the rainfall shadow zone. Okay, ये क्या है? रेनफॉल शेडो जोन है. यहाँ पर भी आपको marginal part में, like eastern Maharashtra, it covers Telangana and southern Madhya Pradesh and part of Chhattisgarh. Here we found the tropical thorn forest in southern India. Okay, so these are two important regions where we found tropical thorn forest in India. First one is the western Punjab, semi-arid region of the western Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. And third one is the second one is the southern India. In southern India, this is the marginal region of the eastern boundary of the Maharashtra, Telangana and Chhattisgarh, part of Chhattisgarh and southern Madhya Pradesh. ये आपका क्या है? यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, प्लांट रिमेन्स लीफलेस इन दिस टाइप ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट बिकॉज हियर वी हैव स्कैरसिटी ऑफ वाटर, वी रिसीव लेस रेनफॉल. सो प्लांट रिमेन लीफलेस थ्रू आउट द ईयर. ओके, पूरे साल लगभग लीफलेस प्लांट आपको देखने को मिलेंगे. ओनली थॉर्न्स रिमेन्स there. Okay, so that's why we known this forest as the tropical thorn forest. Okay, and important vegetation in this tropical thorn forest are babul, khair, bear, babul, bear, khair, neem, palas. This is the palas is also known as the fire of the forest. Okay, fire of the forest in India. Okay, palas, wild date palm and acacia also there, khejri, and one another important vegetation, that is tusky grass. It is found in the tropical thorn forest in India.
the height of the Tuskegee grass is the maximum 2 meter, okay, up to 2 meter, 2 मीटर तक इसकी हाइट जो है वो ग्रो करती है टस्की ग्रास। तो ये एक इम्पोर्टेंट वेजिटेशन है जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में इंडिया में मिलती है, इसको आपको अलग से मेंशन करना होता है, ठीक है। एक यूनिक वेजिटेशन है दैट इज टस्की ग्रास दैट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इन इंडिया। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसको। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट फाउंड इन दोज एरियाज विच रिसीव लेस रेनफॉल, less than 50 centimeter rainfall. So we have two part in India that is receive less than 50 centimeter rainfall. First one is the western part of the Punjab, Haryana, Gujarat and Rajasthan. Okay, so this is the marginal part, marginal region with the with the arid region. Okay, so this is the semi arid region, and in southern India this is the rainfall shadow zone. Okay, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इट दिस रीजन ऑल्सो रिसीव लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। ओके, सो इट कवर्स द ईस्टर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, and important vegetation in this region, babul, bear, khair, neem, palas, acacia and khejri and tuskegee grass is important. Okay, so this description about this is the description about tropical thorn forest. Next we have montane forest. So our fourth category of the forest is the montane forest. Okay, so the word montane means mountains. Clear? So word montane means mountains. So montane forest. Okay, we have two categories in the montane forest. First one is the northern mountain forest and southern mountain forest. In northern mountain forest comprises Himalayan belt. Okay, this is the Himalayan belt and the northeastern mountain hills. Okay, and northeastern mountains, and second one is the southern mountains. In southern mountains we have Vindhya and Satpura range, Western Ghat, Nilgiris. Okay, and some part of the Eastern Ghat. Okay, so first category we have North Mountain range. So here we have northern mountains. So those forest which found in the northern mountain region is known as the northern mountain forest, and those forests which is found in the Vindhyachal and Satpura range and in the Western Ghat and Nilgiris, Palani hills, okay, and the Eastern Ghat, those are considered under the southern mountain forest. Okay, so here we have southern mountain forest, and this region is north mountain forest. क्लियर? माउंटेन फॉरेस्ट में हमने दो कैटेगरी लेके चलते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सेकंड वन इज द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। टू कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड क्यों किया है? रीजन बिहाइंड दिस, the altitude. Okay, so northern mountains have high altitude as compared to the southern mountains. They have 4,000 to 5,000 meter altitude, and in southern mountains or southern India we have average 1,500 altitude. Okay, the height of the mountains average is 1,500. Okay, only. तो सदर्न इंडिया में जो माउंटेन्स हैं उनकी एवरेज हाइट 1,500 है, जबकि यहाँ पर नॉर्दर्न माउंटेन में आपको 5,000 से लेके 6,000 तक के भी माउंटेन हाइट मिलती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर में चेंज आता है विद द ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर में चेंज आता है। अब ये आपको फाइंड करना है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, कि कितने एल्टीट्यूड के साथ, कितनी हाइट के साथ में टेम्परेचर में कितना चेंज आता है। ठीक है, इसको आप फाइंड आउट करेंगे। सो चेंज इन द टेम्परेचर विद चेंजिंग एल्टीट्यूड विच लीड्स टू द चेंजिंग इन द नेचुरल वेजिटेशन। जैसे एल्टीट्यूड में चेंज आएगा, विद एल्टीट्यूड टेम्परेचर क्या करेगा, जितना एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा टेम्परेचर उतना ही क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, so with the changing altitude temperature also change which leads to the change in the natural vegetation। उसकी वजह से क्या होगा, जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन में भी चेंज आएगा।
प्रेसिपिटेशन में चेंज होगा, और जैसे टेम्परेचर में, एल्टीट्यूड में चेंज होगा, प्रेसिपिटेशन में चेंज होगा, दैट लीड्स टू द चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। उसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज आएगा। तो बहुत वेराइटी आपको माउंटेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलती है, बट जनरली जितनी भी टाइप की वेजिटेशन होती है वो माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ओके, so in this we have first category northern mountain forest. Let's discuss the first category. So in northern mountain forest, this is the picture of northern mountain forest vegetation. According to Himalayan region, we have these type of the vegetation in northern mountain. Top to bottom, if we look top to bottom, then here we have no vegetation, just because this region is covered with the ice caps. Okay, this region is covered with the ice cap. So due to ice cap, there is a extreme cold climatic condition are there. So in extreme condition, no vegetation are there. Okay, so this is the snow line. So here we have snow line. Okay, so in the top region of the northern mountain, we didn't found any type of the vegetation, just because this region is fully covered with the ice cap throughout the year. So we have extreme climatic conditions, extreme climate, cold climatic condition are there. Okay, and just in the margin of this region we have tundra type vegetation, only mosses and lichen are there. Okay, so small vegetation are there. Then we have alpine and the coniferous forest at the altitude of the 3000 to 4000 meter. Okay, so alpine, then coniferous, height is, altitude is 3000 to 4000 meter. देखिए हम इसको टॉप टू बॉटम इसको देख रहे हैं। टॉप टू बॉटम में हम यदि चलते हैं तो टॉप में आपको कोई भी वेजिटेशन नहीं मिलेगी ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। आइस कैप्स आर थ्रू आउट द ईयर आइस कैप से कवर रहता है। देन उसके बाद में टुंड्रा टाइप वेजिटेशन मिलेगी, ओनली मॉसेज एंड लाइकेन आर देयर। देन अल्पाइन एंड कोनीफेरस फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे एट द एल्टीट्यूड ऑफ 3000 to 4000 मीटर। ओके, एंड द इम्पोर्टेंट वेजिटेशन इन दिस रीजन ब्लू पाइन, silver fir and junipers. Okay, and birds also are there. So blue pine, silver and juniper are important vegetation in the alpine and the coniferous region. Coniferous, ये देखिए नेम देखिए coniferous, just because of the shape of the tree, cone shape आपको trees की shape मिलेगी. So these forest is known as the coniferous forest. Okay, फिर आप देखिए at the height of 1000 to 2000 मीटर just bottom the coniferous forest we have wet temperate climatic condition are there. So we have temperate type vegetation at the altitude of 1000 to 2000 meter. Oak, chestnut and the pine are there. Okay, oak, chestnut and pine. And in the marginal region of coniferous forest and the wet temperate forest we have temperate grassland. क्या मिलेगा आपको? Temperate grassland मिलेगी। Then next is the deciduous, last in the foothills of the Himalaya. एकदम से लोअर एल्टीट्यूड पे आपको क्या मिलेगा? डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है? 100 to 150 सेंटीमीटर। सो वी हैव मॉइस्ट, कौन से डेसिडियस फॉरेस्ट भी कौन से मिलेंगे? मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। So in the foothills of Himalaya we have moist deciduous forest. So almost all the vegetation are there in the northern mountain forest region. Okay, then we divide northern mountain forest region in the tropical type vegetation are there, subtropical vegetation are there, and temperate vegetation we also found, temperate vegetation and alpine vegetation. So these are the four category of vegetation that we found in the northern mountain region. So we have four important information for you in the northern mountain forest.
that is oak and the chestnut is the important vegetation found in the Bengal, West Bengal mountain region and the Uttaranchal mountain region in Uttarakhand. Okay, and Devdar is the another important vegetation that is found in the western Himalayan region. Devdar is a commercial tree. Okay, it has commercial significance. Okay, so Devdar is found in the western Himalayan region. Next one is the chinar and the walnut that is found in the Kashmir Himalaya, and they are important for the handicraft of the Kashmir region. Okay, एक information और है that we also divide northern mountain forest into two parts, that is eastern mountain forest, North Indian eastern mountain forest and the western mountain forest of North India. ऐसा डिवीजन हम क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो आपने हिमालय का जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा दैट इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स मोर इन द ईस्टर्न रीजन एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न रीजन. सो हाई माउंटेन्स रीजन माउंटेन्स आपको मिलेंगे, हाई एल्टीट्यूड के माउंटेन्स आपको मिलेंगे इन ईस्टर्न हिमालय, बट इन द वेस्टर्न हिमालय एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयन माउंटेन्स आर लेस एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न माउंटेन. ओके, तो आपको यहाँ पे एल्टीट्यूड कम मिलेगा, बट विड्थ जो है हिमालय की वो वेस्टर्न साइड में ज़्यादा है. विड्थ ईस्टर्न में कम मिलेगी लेकिन एल्टीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा. सो ड्यू टू एल्टीट्यूड टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होगा. जहाँ पे टेम्परेचर एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर कम होगा, और जहाँ पर एल्टीट्यूड कम होगा वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो उसकी वजह से स्नो लाइन में डिफरेंस आ जाता है. जो स्नो लाइन जो होगी वो यहाँ पर हाई होगी. ठीक है, इन दिस ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट स्नो लाइन जो है वो क्या होगी, हाई. और वेस्टर्न हिमालयन बेल्ट में आपको क्या मिलेगा, स्नो लाइन जो है वो लो मिलेगी. सो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की वेजिटेशन में डिफरेंस आता है. तो इसीलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं. ईस्टर्न माउंटेन ऑफ नॉर्दर्न हिमालय, माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्दर्न हिमालय एंड द वेस्टर्न माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हिमालय. सो आज के लिए इतना काफ़ी है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सदर्न इंडिया, माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ द सदर्न इंडिया. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.